Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is hernias. Hernias is basically the protrusion or pushing of any internal organ through a weak spot in the tissue or the muscle. hernia बेसिकली ये है कि बॉडी की किसी भी वीकेंड एरिया से इंटरनल ऑर्गन का प्रोट्रूड करना, बाहर निकल जाना। हर्निया हैज़ बेसिकली टू टाइप्स, external hernia and internal hernia. External hernia is actually protrusion of any internal organ, mostly small intestine, through the greater sac कि पेरिटोनियम से बाहर निकल आना किसी भी ओपनिंग के थ्रू, उसको हम एक्सटर्नल हर्निया कहते हैं। सो इट हैज़ बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स: umbilical hernia, para-umbilical hernia, epigastric hernia, incisional, femoral and inguinal hernia. Umbilical hernia is herniation through the umbilical ring, which is the weaker portion of the anterior abdominal wall, and it actually happens mostly in the neonates. वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जब umbilical cord को कट किया जाता है तो उस एरिया में प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज्ड हो जाता है, तो अम्बलाइकल रीजन से हर्निएशन हो जाती है। सेकेंड टाइप इज़ पैरा अम्बलाइकल हर्निया। पैरा अम्बलाइकल हर्निया इज़ एक्चुअली हर्निएशन थ्रू द पार्ट अराउंड द अम्बलाइकल रिंग. इट कैन बी ईदर अबव और बिलो दी अम्बलाइकल रिंग, अम्बलाइकल रीजन से ऊपर या नीचे कहीं से भी हो सकता है. देन वी हैव फेमरल हर्नियाज. फेमरल हर्नियाज हर्निएशन थ्रू दी फेमरल कैनाल, फेमरल कैनाल में से, एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम फेमरल हर्निया बाय डिफ्रेंशिएशन पॉइंट के इट्स सैक लाइज below and lateral to the pubic tubercle. And secondly, it occurs most commonly in females because females have a wider pelvis. और थर्ड डिफरेंस ये है कि it is more commonly strangulated. Strangulation means hernial sac gets stuck, कि वो वहाँ पे फंस जाता है क्योंकि हर्नियल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड इट कॉजेज़ इस्कीमिया बिकॉज़ उस एरिया में हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाता है, एंड इट लीड्स टू इस्कीमिया ऑफ द हर्नियल सैक. Then we have inguinal hernia. Inguinal hernia is passing of hernial sac through the inguinal canal, and it is of two types: direct inguinal hernia and indirect inguinal hernia. Now we can see the locations of different inguinal hernias: epigastric, umbilical, femoral and inguinal. Direct inguinal hernia protrudes through the Hasselbach triangle or inguinal triangle into the inguinal canal. Hasselbach triangle is an area of weakness in the lower anterior abdominal wall or groin region. Now we can see Hasselbach triangle here in the diagram, where its boundaries too are mentioned. Its boundaries are: medial to it is the rectus abdominis muscle, and lateral to it is the inferior epigastric vessels, and inferiorly is the inguinal ligament. So it is an area of weakness through which the hernial sac can protrude into the inguinal canal. Here is our Hasselbach triangle. Then we have indirect inguinal hernia. Indirect inguinal hernia is actually protrusion of the hernial sac through the deep inguinal ring. Then we can see direct and indirect inguinal hernias here. Indirect inguinal hernia can descend into the scrotum, and it enters lateral to the inferior epigastric vessels, while direct inguinal hernia cannot descend into the scrotum and it enters medial to inferior epigastric vessels. Other differences are mentioned here. And now we have internal hernias. Internal hernias means within the peritoneum, कि पेरिटोनियम के अंदर ही हर्निएशन होगी, कि ग्रेटर सैक से लेसर सैक में हर्निएशन हो सकती है, एंड इट एक्चुअली अकर्स फ्रॉम ग्रेटर सैक इनटू द लेसर सैक, कि ग्रेटर सैक से हमारे पास लेसर सैक में कंटेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं, एंड इट अकर्स थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग विच इज़ एपिप्लोइक फोरामेन. Epiploic foramen is a communication between the greater sac and the lesser sac, and it is the only communication.
So its boundaries are very important clinically. So we are now going to discuss its boundaries. It is bounded anteriorly by the porta hepatis of the liver and posteriorly by the inferior vena cava, superiorly by the caudate lobe of the liver, and inferiorly by the first part of the duodenum. So its boundaries are very important. It has no movable boundary. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ओपनिंग है बिकॉज़ अगर यहाँ से हमारे पास हर्नियल सैक एंटर हो गया इनटू द लेसर सैक, तो इट ऑल्सो वुड लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स कि स्टमक हमारा डिस्टेंड नहीं कर पाएगा एंड प्रेशर होगा हमारे स्टमक पर. तो इस हर्नियल सैक को रिमूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस फोरामिन इज़ बाउंडेड ऑल अराउंड बाय द ब्लड वेसल्स. सो इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है. सो हर्नियल सैक को हम अप्रोच करते हैं वो 4 लेयर्स जो हमारे पास थी ग्रेटर ओमेंटम की, वहाँ से, बिकॉज दैट इज़ अ ब्लडलेस जोन ऑफ द पेरिटोनियम. तो वहाँ पर ब्लीडिंग के लीस्ट चांसेस होंगे बिकॉज देयर आर नो प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स देयर. अब हम इसकी लोकेशन देख लेंगे एपिप्लोइक फोरामेन की, which is very clearly mentioned here. So this was all about the herniation and its types and all the boundaries and boundaries of the epiploic foramen and all about the Hasselbach triangle. So thanks for watching.